We have completed the discussion on the innate immunity. Now we will discuss about what is meant by acquired immunity. As I told you earlier, immunity is of two different types: the acquired immunity as well as inborn immunity. That is innate immunity. About this innate immunity, we have discussed in detail study what are the different four different barriers of this innate immunity in our earlier lecture when their link is given in the description. Now, innate immunity is also known as inborn or congenital. Now, let us discuss the in detail study about acquired immunity and how does it is participate. Then, acquired immunity is also known as adaptive immunity or specific immunity. Then, there it is of two important types. It is divided into two different types. This acquired immunity it works in two different ways. The first one is the active acquired immunity, and second one is the passive acquired immunity. Actively acquired immunity as well as passively acquired immunity. What is the basic idea behind this? बच्चों इसे याद रखना है आप सभी को इसे याद रखना है. क्या याद रखना है? The acquired immunity, it is the immunity which is related with antigen and antibody interaction. Antigen and antibody interaction. That is, इसे कहते हैं that is serological reaction. So serological reaction में the serological reaction it involved in acquired immunity. So acquired immunity में ये सारी चीजें होती. Acquired immunity is that immunity that depends on the fighting against the antigen with the help of antibodies is known as acquired immunity. The main part is antibodies. And the production of antibodies it depends on two different ways. Okay, it involves the participation of two different cycles. वो दो different cycle कौन से होते हैं? वो different actually are the responses, that is the cellular level, that is cellular level, or we can say the cell mediated immunity which is performed by the T lymphocyte cells. बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना. And the second important reaction that's involved in acquired immunity is that is the humoral. The humoral mediated immunity, and it is performed by the B lymphocyte. So these two reactions participate in acquired immunity. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और इसी की वजह से हमारे जो एंटीबॉडीज है इससे संबंधित क्रिया. So acquired immunity it involves the participation of glycoprotein known as the antibodies, and on the basis of the source of the antibody, sources क्या है antibodies के? We divide the acquired immunity into two different types, that is known as the actively acquired immunity. When the antibodies are produced inside the body, okay, inside the itself body, that is known as actively acquired immunity. By performing cell-mediated and humoral-mediated immunity. But what is meant by passive immunity? In passive immunity, the antibodies are gained from others. Gained from others. That is from mother or artificially from vaccine. Okay. So if the antibodies are produced inside the body, that is known as, उसे हम क्या कहते हैं? That is known as active acquired immunity. When antibodies are not produced, but in spite of these antibodies, they are gained from any other sources other than self body, that is known as passive acquired immunity. दोनों में भी एंटीबॉडीज का पार्टिसिपेशन है, याद रखना. मगर एंटीबॉडीज कहाँ से लिए जा रहे हैं? एंटीबॉडीज अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे तो उसे एक्टिव
सेल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। और वही इफ द एंटीबॉडीज, अगर एंटीबॉडीज किसी बाहर के सोर्स से हमारे बॉडी के भीतर आ रहे हैं तो इसे हम पैसिवली एक्वायर इम्यूनिटी कहेंगे। तो चलिए इन दोनों के एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, इस पर गौर से आपको इस दोनों के बारे में याद रखना है। So, actively acquired immunity is of two different types, that is natural active acquired immunity and artificial active acquired immunity. Okay, तो साथ ही साथ पैसिव इम्यूनिटी के भी दो डिफरेंट टाइप्स है, नेचुरली नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनके जो डिफरेंट टाइप्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ द नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, in this natural acquired immunity, our body gains the immunity against the particular pathogen or infection or against the antigen naturally, like the measles. Okay, so एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको हमने पहले ही बताया, एक्वायर इम्यूनिटी को एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ एडेप्टिव लिखा गया है, तो ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। देन एक्वायर इम्यूनिटी को ही एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। So, acquired immunity, it can be gained naturally or artificially. The naturally it is gained via food items, water, or air. When antigen comes in contact with our immune system gets stimulated against the exposure to the antigen. For example, measles. Measles, जिसे हम देवी रोग कहते हैं, कांजिया कहते हैं मराठी में. So that is the example of measles is the example of the actively acquire natural immunity. Then artificial immunity, जैसे कि आपको पता है आज 27 फरवरी है और आज पूरे देश में पोलियो का डोज दिया जा रहा है। ओके, तो पोलियो के दो तरह के वैक्सीन होते हैं, एक ओरल वैक्सीन होती है और एक आईवी वैक्सीन होती है। ओके, साल्क एंड सेविन इसे हम कहते हैं। तो आर्टिफिशियली जो वैक्सीनेशन दिया जाता है बाय ओरल या आईवी के द्वारा इंट्रावेनस, तो उसे हम आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, सो दिस वैक्सीन इट कंटेन एटेन्यूएटेड और half killed or inactive antigenic component that is injected into our body to get exposure to get identified by our immune system, so that our immune system gets stimulated against the introduction of the antigen. So the artificially, if the vaccine is given, that vaccine it contains antigenic component. Against this antigenic component, our immune system gets stimulated. That is the example of artificially active immunity. What are the different examples? इसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर देयर डिफरेंट एग्जांपल्स? इनके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है? द फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज you might have been familiar with the BCG. BCG. What is this BCG? BCG is Bacillus gamete. On the name of discoverer, it causes this the bacillus bacteria that causes the, we can say, that is tuberculosis. Then against this tuberculosis, the newborn baby, it is vaccinated with this BCG, that is Bacillus gamete. This is the important vaccine given to the newborn baby against the tuberculosis. Then second one important, that is triple dose. We can call the triple dose, that is triple vaccine, that is measles, MMR, measles, mumps, and rubella. These are very hazardous, lethal infection caused by the viruses. Measles, mumps, and rubella are the viral infections, and due to these, the death of newborn baby may happen. Therefore, this triple dose, MMR dose, is given artificially. It is given to activate the immune system in the newborn baby. Now, again, many other different types of the other different vaccine is also given, like polio
myelitis vaccine as poliomyelitis vaccine. It is oral as well as the IV vaccine. So, like this, different types of vaccination which is given in newborn and growing babies, it is the example of artificially acquired immunity. Now, let us discuss about the different types. The second one type, that is the passive immunity. तो इन दोनों के एग्जांपल याद रखना है आपको, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. Let us discuss about the passive acquired immunity. Again, it is divided into two different types: natural passive acquired immunity as well as artificial passive acquired immunity. So, natural passive acquired immunity, it is the most important one. Now, see, जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पैदा नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि किसी और के बॉडी से, फॉर एग्जांपल मदर से या फीटस में ट्रांसफर होते हैं, या फिर आर्टिफिशियली आफ्टर इन्फेक्शन इट इज गिवन. बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये है कि आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये वैक्सीन लिए जाते हैं ताकि भविष्य में हमें इन्फेक्शन ना हो, इसलिए. मगर आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये ऐसी इम्यूनिटी है जो आफ्टर इंसिडेंट, if the incident is occur, then it is given, like the snake bite, dog bite, reptilian bite, okay, avian bite, etc. okay, और mammalian bite. तो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है, रेप्टाइल, एओस, मैमल, इनके बाइट के होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद हमें आर्टिफिशियली वैक्सीन लिया जाता है, और उस वैक्सीन में उन डिफरेंट एनिमल्स के अगेंस्ट एंटीडोट होते हैं. ओके, एंटीडोट होते हैं. ओके, so that is the, उसे हम कहेंगे that is the we can say the passive artificially acquired immunity. चलिए, तो आगे हम डिस्कस करते हैं. ओके, so let us discuss about the natural passive acquired immunity. ये क्या होता है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा. तो naturally passive acquired immunity, इसमें क्या होता है, what is this, इसके बारे में क्या होता है. Okay, naturally, now the growing baby or the fetus present in the womb, it gets its nutrition and other different substances through the placenta. Placenta, it is the tissue, tubular tissue, that acts as the medium or connection for the transport of different types of substances between the mother and the fetus. This fetus, okay, through the placenta. Hello. Please keep mute your mic, please. Okay. अगर आपको डाउट है तो you may ask your question. Okay. So this fetus, it gets its nutrition and other different substances from the mother through the placenta. Placenta, it is the tissue disc that filters the different types of substances that transferring from mother to the fetus and vice versa. Then, through this placenta, the immunoglobulin G, it is passing through this placenta into the fetus. Now, the entry of this immunoglobulin G to the fetus, it is the example of the natural passive immunity. Now, this immunoglobulin G, okay, when this fetus is developing inside the womb, then the immune system is not developed. The acquired immunity is not developed. Therefore, for the sake of protection after the birth, the immunoglobulin G, it is transferring from mother to the fetus to the placenta. Now, that is the naturally passive acquired immunity. Then, as well as after birth, we know that after birth, the yellow colored milk that is secreted, the first milk that is produced by the mammary gland in the pregnant lady, that is known as colostrum. And this colostrum, बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, this colostrum, it contains immunoglobulin G, that is antibody G होता है, sorry, antibody A होता है. So
the first milk of the pregnant lady that is feed to the newborn baby. Why? Because must have to be feed to the newborn baby. Why? Because that slightly yellowish colored milk is known as colostrum. And this colostrum, it contains immunoglobulin A, IgA. बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. The colostrum or the first milk of the pregnant lady is known as colostrum and it is rich in the immunoglobulin A, that is antibody A. ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपने याद रखना है. So what is this? It is known as the naturally passive acquired immunity. The next one, that is the transfer of antibodies from mother to the fetus through the placenta, that is immunoglobulin G, and through the colostrum, that is immunoglobulin A. चलिए second one, the artificially passive acquired immunity के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसके बारे में कहना ये है कि after incident happening, then the vaccination is given against the different types of antigenic components of the pathogen. For example, we know that the tetanus tetani, the injection of tetanus is given after the injury. Okay, we know that is ATS. ATS का मतलब क्या होता है? That is the serum, anti-tetanus serum means the antibodies given after injury to avoid the tetanus tetani disease. टिटेनस टिटेनी डिसीज, हमें कहीं चोट लग जाती है, कोई मेटल का मार लगता है, कोई पुराना अगर कोई रस्टेड आयरन होता है उसका अगर कहीं इंजरी हो जाती है, तब हमें एक टिटेनस टिटेनी का हम इंजेक्शन देते हैं. ओके, क्योंकि वहां पर इंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग टिटेनस बैक्टीरिया रह सकते हैं. इस वजह से ओके, टू अवॉइड देयर tetanic acid after infection, these tetanus bacteria, it releases that is tetanic acid, and it causes the over contraction or the over contraction of the muscles of different body parts, and it does not get relaxed, so that due to such way the air passage will get blocked. Okay, there will be a difficulty in breathing may occur. To avoid all these things, the after incident, if it is happening, when the injuries occur, then after that injury, to avoid the infection of tetanus tetani, the incident person must have to be vaccinated with the TT injection, that is tetanus tetani injection. Likewise, the snake bite, okay, after snake bite, we take the antidote. That antidote contains the active component against the antidote against that snake. Likewise, the dog bite, after dog bite, the anti-rabies vaccine is given. That anti-rabies vaccine is contains the serum. Serum means the antibodies against the rabies virus. Okay. Now, first type of vaccine is not given during means after birth. Why? Because क्योंकि हर एक इंसान को बचपन में डॉग बाइट होता ही है क्या? नहीं होता है. But the artificially active vaccination, it is given for those different virus or bacterial diseases that cannot be get avoided. Their entry cannot be avoided because these pathogens, they enter into the human body or the newborn baby through food, water and air. ओके, तो ये जो तीन चीजें हैं, क्या हम उस बेबी को वाटर से दूर रख सकते हैं क्या? नहीं. फूड आइटम से दूर रख सकते हैं क्या? नहीं. क्या एयर का एक्सचेंज रोक सकता है क्या? नहीं. तो ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल चीजें हैं और इसी के माध्यम से वायरस जो है ये इंटर होते हैं. जो बैक्टीरिया या वायरस, हजार्डस बैक्टीरिया और वायरस की जो इन्फेक्शन है जो इन तीन माध्यम से बचपन में होते हैं, उनके अगेंस्ट ही बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं. ओके, बाकी के जो है डॉग बाइट, देन स्नेक बाइट एक्सेट्रा, तो ये जो चीजें हैं वो अवॉइड हो जाती है, इसीलिए उनके वैक्सीन बचपन में नहीं दी जाते. जब इंसिडेंट होता है तभी वो वैक्सीन दी जाती है, इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Okay, so ये था that is the
एक्वायर इम्यूनिटी। चलिए हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेस है, फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है। Now, what are these different questions? Let us discuss the point that is responses, the responses of the immunity. Okay, responses of the immunity. There are two important responses of the immunity. Now, no doubt, it is the acquired immunity, responses of acquired immunity. Now, on x-axis, the primary and secondary responses is given on x-axis, and the y-axis, the time, intensity, and antibodies production. It is given on y-axis. Primary immune response का मतलब क्या है? Now, whenever our immune system exposed for the first time to the pathogen, then our immunity gets stimulated against that pathogen for the first time in the life. That is known as the primary immune response. उसे हम कहते हैं primary immune response. Okay, the primary immune response is the result of the first encounter of the pathogen with our immune system. And what is its important point? Now, see, you have to consider that the primary immune response is of its intensity is of low level. Intensity low level की होती है. But for the identification as well as developing the memory against the antigen, the primary immune response, it works for long time. Because during this primary immune response, for the first time, the antibodies that comes in contact with the antigen is the M, immunoglobulin M. इसे याद रखना है. After first exposure to the antigen, our immune system it produces M. Therefore, therefore, the immune response is not so intense. इसीलिए immune response जो है वो ज्यादा इंटेंस नहीं होता. इट इज फेबल मीन्स ये स्लो और ये ज्यादा इंटेंस नहीं होता. ओके, देन क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन, एज वेल एज it involves the participation of two different types of the cell, two different types of mechanism, that is the cellular, that is cell mediated immunity performed by the T lymphocyte and the humoral immunity performed by the B lymphocyte. And for developing the cell mediated and humoral immunity, it takes longer duration of time. Therefore, the primary immune response is its time period is very much longer. Their intensity is feeble or of low intensity, and antibodies count is also very lesser. Therefore, this is the first exposure, that is the first exposure of antigen to our immune system is known as the primary immune response. But whenever the subsequent the antigen comes in encounter with our immune system for the second time or third time, okay, it causes the secondary immune response, whatever the may be, second, third, fourth, whatever time the antigen enter into our body, that will be acts as a secondary immune response. And the secondary immune response, it is of high intensity and it is of short duration. ये हाई इंटेंसिटी का होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. अगर आप यहाँ देखोगे तो इसकी इंटेंसिटी ये बहुत ही हाई है और इसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है. Why it is so much intense and of short duration? Because during the primary immune response, already the memory is developed against the pathogen. Therefore, this primary immune response is not required for the second time exposure of the antigen. And for this, the second immune response, it does not have to work with the cell mediated or humoral immunity.
it has the permanent immunity against the antigen. Okay, after the first immune response. Therefore, it responds very quickly and fastly. And during this immune response, they produces a tremendous amount of the immunoglobulin G. Therefore, its intensity very much greater, tenfold higher than the primary immune response. So this one is the difference between primary and secondary immune response. तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए, दिस सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो पार्टिसिपेशन करने वाला इसमें जो पार्टिसिपेशन करने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एंटीबॉडी जी कहते हैं। There are 5 different antibodies that take part in different responses. Out of these, the most abundant antibody is the immunoglobulin G, and its structure looks like this structure. That is, its structure looks like Y. ये Y की तरह या फिर फोर्क की तरह नजर आ रहा है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है? नाउ इसके बारे में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ये पूछे गए हैं। 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन होता है, ये सारे पॉइंट याद रखना है। सो एंटीबॉडीज इज द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ओके, एंड और that is they are known as a serum protein. इसी को हम सीरम प्रोटीन कहते हैं, ओके, एंड इट इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। बच्चों इसे इस वर्ड को याद रखना है, कभी एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन नाम के टर्म से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, ए, एम, ई, डी, गेम्स, इस निमोनिक्स को याद रखो। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, डी, ठीक है। तो इसे लिखा जाता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgA, ओके, IgM, IgE और IgD, ऐसे इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इसका लिखना, ओके, ऐसे आपको लिखना है, अगर आपको याद रखना ही होगा इसके बारे में। चलिए अगला पॉइंट। सो अगला पॉइंट आपको बता दें कि सबसे जो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ओके, जो मोस्ट अबंडेंट है, और जो सबसे लेस मींस बाकी के जो सारे हैं वो लेसली प्रेजेंट है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। देन चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है इनके बारे में देखिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट प्रोटीन चेन। द हेवी प्रोटीन चेन इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड द लाइट प्रोटीन चेन इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। Then both of these two, this heavy chain, it has the same that is same sequences of the amino acid. Okay, no doubt. This heavy as well as light chain, it contains the 2 different ends. That is the N end, that is amino end, and the C end, that is the carboxylic end. Okay, now these are the C ends and N ends. Light chain and heavy chain, both are respectively consist of the similar complement, okay, same type of the sequence protein, may have the variable regions, okay, constant region as well as variable regions they have, okay. Now both the protein heavy chain has the constant protein chain. Now this black line indicates the constant protein chain, the constant region of the heavy chain, okay. They have the same type of the amino acid, and these amino acids, they are get stable by the disulfide bond. These 2 dots indicate the sulfide, okay, and their bond is known as the disulfide bond. With this, the cysteine that presents in the protein chain, the cysteine, it participates in the formation of disulfide bond, and this disulfide bond in the protein, it gives the stability, as well as in between the protein, it gives the stability. तो ये सल्फाइड बॉन्ड है जो इन्हें स्टेबल बनाता है, स्टेबिलिटी देता है, ओके। एज वेल एज दिस लाइट चेन इज आल्सो कंटेन द कांस्टेंट लाइट चेन, इसे हम LC, ओके, LC मींस कांस्टेंट लाइट चेन, LC मींस कांस्टेंट लाइट चेन,
VC means that is the heavy. SC means heavy, constant heavy chain, SC. ओके, या CL कह सकते हो, या कांस्टेंट लाइट चेन, या CL कांस्टेंट लाइट चेन, या CH यानी कांस्टेंट हेवी चेन। ठीक है, इनका जो सीक्वेंस है ये सेम होता है, सेम न्यूक्लियोटाइड का होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट हेवी चेन, कांस्टेंट लाइट चेन कहा गया है। ओके, तो इस लाइट चेन का सीक्वेंस सेम है इन दोनों का, इस वजह से इसे कांस्टेंट लाइट चेन कहा गया है। बट both these two, heavy as well as light chain, it has the variable arm or variable chain. इसे हम VC, that is variable region, okay, HV means heavy chain, variable region of heavy chain. Then this yellow color region is known as the light variable chain of the light chain, variable region of the light chain. Then heavy, that is the variable region of the heavy chain। जो ब्लैक कलर का पार्ट हमने यहाँ पर दिखाया है ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है। ओके, एज वेल एज वेरिएबल रीजन VL से करेंगे, एंड वेरिएबल रीजन ऑफ द हेवी चेन है। ओके, सो VH को VL कीजिए या LV कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये वेरिएबल रीजन है, एंड दिस वेरिएबल रीजन आर द रीजन, दैट इज, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द, इसे आप क्या कहते हो, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, द एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन the antigen binding site which is present on variable regions of heavy and light chain, that is known as, उसे आप कहते हो, that is known as the paratomes, उसे हम पैराटोम कहते हैं। तो दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एंटीजन बाइंड होते हैं। ओके, नाउ ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी का फंक्शन है इट फाइट अगेंस्ट द एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज यहीं पर इस जगह पर जो है, एंटीबॉडीज जो है ये उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या एग्लूटिनेट कर सकते हैं, या इमोबिलाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन। ठीक है, और जो एंटीजन यहाँ बाइंड होते हैं, एंटीजन जो